ऑडियंस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है हुमा से, शी इज विलिंग एंड शी इज रेडी. सो किसी को अगर कुछ पूछना, प्लीज रेज योर हैंड्स. The gentleman in the glasses who's already stood up. हेलो उमा. गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक बड़ा फैन हूँ. स्कूल में था तब से गैंग्स ऑफ वासेपुर दोनों पार्ट से देखा था. टॉपिक के ऊपर आते हैं. अभी OTT आ गया और एक तरफ बॉलीवुड और एक OTT. मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि OTT में रॉ टैलेंट जा रहा है. आपको भी पता है कि हम खुल के कुछ कर सकते हैं OTT में, और करवा रहे हैं भी डायरेक्टर. अभी फिल्म रिलीज हो रहा है, एक के बाद एक फिल्म. ठीक है, आलिया का फिल्म चल गया इसीलिए कि बड़ा बैनर था. आज झुंड रिलीज हुआ अमिताभ जी का. मैं हॉल गया था पहले दिन. इतना बेहतरीन फिल्म था और ऑडियंस 30 या 4 हो गए, मतलब बड़े से मल्टीप्लेक्स में. वो फिल्म अगर OTT में रिलीज होगा तो बहुत सारे लोग देखेंगे, अप्रिशिएशन मिलेगा और अच्छा भी चलेगा. समझ रहे हैं दोनों बात. तो अभी OTT आने के बाद काम मिल गया एक्टर को, बट हॉल कहीं ना कहीं स्क्वीज हो जा रहा है क्या? टैलेंट को स्कोप मिल रहा है मगर हॉल स्क्वीज हो जा रहा है क्या? या फिर बॉलीवुड स्क्वीज हो जाएगा क्या? अगर इस तरह से चलता गया कुछ दौर तो हॉल बंद हो सकता है. हॉल बंद हो गया तो बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट डालेगा. पैंडेमिक आया, एक्टर्स और बाकी इंडस्ट्री को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया. मगर अगर OTT चलता गया और उसी तरह से बॉलीवुड आगे ना बढ़ा तो ये इम्पैक्ट डालेगा क्या एक्टर के ऊपर और बाकी इंडस्ट्री के ऊपर? आपको क्या लगता है? बिकॉज कि यू आर डूइंग बोथ ऑफ सेक्टर. OTT में तो सब सवाल भी पूछे, जवाब दे दिया. ना आप देंगे ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ. थैंक यू. तो व्हाट इज योर क्वेश्चन? आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग. कि बॉलीवुड जो एक्टर्स हैं वो OTT पे काम कर रहे हैं और सिनेमा में मतलब जो रिलीज होगा उसमें भी काम कर रहे हैं. OTT के साथ साथ हम बॉलीवुड को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? मतलब थिएटर को कैसे आगे लेने के लिए ये चीज़ को हम कैसे मतलब जो मेन स्ट्रीम में काम कर रहे हैं आप लोग, वो किस तरीके से इसको? सर मैं आपको एक इसका जवाब देती हूँ. एज एन एक्टर एंड एज एन ऑडियंस आई थिंक ये बहुत ही बेहतरीन टाइम है कंटेंट का. एज एन एक्टर आप देखो ना, मेरे पास कितने ऑप्शन है. मैं एक बड़ी फिल्म कर सकती हूँ जो थिएटर में आती है. मैं एक एक्शन फिल्म कर सकती हूँ जो आप एक बड़े पर्दे पे देख सकते हो. मैं एक सीरीज़ कर सकती हूँ अबाउट अ गर्ल फ्रॉम द विलेज जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है. मैं एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर सकती हूँ. मैं एक रीजनल फिल्म कर सकती हूँ. सो एज एन एक्टर मेरे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है. एज एन ऑडियंस यू हैव ऑल दोज ऑप्शंस. सो आई फील इवेंचुअली कौन सी फिल्म कहाँ पे आती है, क्या चलती है, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक इट्स मोर a prerogative and a lookout for the producers and the content makers, because ultimately it's also a business which they need to monetize and make money. But for an audience like you and for an actor like me, it's a win-win situation. You get to see a beautiful film like June, which I have not seen by the way, but I've heard it's fantastic. And I'm a huge admirer, of course, of Bachchan sir and the director. So I'm dying to watch the film. And I'm sure it'll find its audience. It's too early to call it that. See, also we are in such an instant generation ना. 5 मिनट के नूडल, 30 सेकंड में हाथ साफ. यू नो लाइक वी आर सो यूज्ड टू लाइक दीज क्विक फिक्सेस. पहले ज़माने में पिक्चरें आती थी, मतलब गोल्डन जुबली होती थी. दे हैड टाइम टू सेवर इट, टू एक्सपीरियंस इट. उस टाइम पे इट वाज़न्ट कि फ्राइडे क्या खुला, वीकेंड क्या लगा. एंड आई फील समवेयर, मतलब मैं अपनी मॉम को बोलती हूँ ना, व्हेन शी आस्क्स मी दीज क्वेश्चंस, मैं कहा आपको क्या पिक्चर ने 100 करोड़ किए या नहीं किए, आपको अच्छी लगी, मज़ा आया, देखोगे याद रहेगी. So many films like she'll watch. I'm like मुझे तो अच्छी नहीं लगी, चल क्यों रही है? मैंने कहा चल रही है, वो प्रोड्यूसर का लुकआउट है, पैसा उसके पास जा रहा है. Did you enjoy the film or not? Did you have fun or not? And I feel there's so many films which are our favorites that we still talk about and remember, but they may not have been box office successes. So मेरा मानना, I'm a purist in that sense. I feel like I judge a film by not how much the producer has made money, but did I enjoy that film or not? And I think that is what we should all be doing. Any more questions? Yes. Please give the gentleman the mic. Hello. Okay. Good afternoon, Huma. Salam. First and foremost, thank you very much for gracing this occasion, and you're absolutely looking stunning. मैं थोड़ा सा कुछ आपको पहले बधाई देना चाहूँगा. Within such a short span, you've done such variety of work. From Gangs to Maharani to Badlapur, big about Dead Ishke and now Gangubai. मैं कहीं ना कहीं उस एक्सटेंशन को, पहले तो इंट्रोडक्शन दे दो. आई एम बुधायते मोहंती,
मैं यहाँ का एक्टर हूँ, I've done TV serials also. So I've seen both worlds of Bollywood and Hollywood here. कहीं ना कहीं topic and questions similar हो जाते हैं, तो मेरा भी वैसा ही है. When television came, they said cinema has a problem. फिर VCR आया, फिर DVDs आए, फिर CDs आए, फिर online leak हुए. Now OTT is posing a huge challenge to multiplexes and big screen films. कहीं ना कहीं आपने शुरुआत में जैसा कहा, I have an option of going out or staying at home. तो आपको क्या लगता है, in the future, say next 4 or 5 years, will they peacefully coexist, the big screen and OTT, और कहीं ना कहीं एक balance tilt होगा on favor of OTT or big screen? आपको क्या लगता है? Thank you for your question and thank you for the very sweet things you said. Please sit. Thank you. I think they will coexist, but this is my understanding and reading. क्योंकि मुझे लगता है increasingly we all हम ना अपने experience को customize करना चाहते हैं. Let me explain to you. Like for example, पहले शादियाँ होती थी, तो सब लड़कियाँ एक लाल जोड़ा पहनती थी, say for example. But today, like all brides want themes and things and whatnot. I feel it's also because it's just changing palette of our times. Similarly, I feel today both will coexist purely because we need something for each season, each mood, each occasion. When a big Spider-Man movie comes, we all want to see it. You know, because we have so much nostalgia and childhood memories with Spider-Man. And so do I think our parents. So it's like this whole generational fandom that, these films have. Similarly, there's some directors like Sanjay Leela Bhansali, Rohit Shetty, Rajkumar Hirani, when their films come, it's an event because Rajamouli sir, they're events because we want to watch their films. We've invested in those films and we've always been entertained by their cinema. And of course, there are some people, say for example, what OTT has done very importantly, I feel, is somehow made it a bit more democratic. Today, any boy or girl sitting in any part of this country with a camera and an idea, can cheaply, easily make a film, a series, whatever. It's democracy, right, at its best, as opposed to only some people having, I don't know, the resources to make a film. Abhi to film bhi nahi use hoti, ab to main digital pe karte, so actually it's come down so much. So, and there's so many stories, therefore it'll throw up, and so many perspectives that it'll throw up. Regional cinema, is thriving right now, So I feel both will coexist, both will thrive, and both will be enjoyed by all. Thank you so much. आपके साथ काम करने का मौका कैसे मिलेगा? तो कोई प्रोड्यूसर ढूंढ लीजिए. नहीं, प्रोड्यूसर की बात नहीं, यहाँ के तो हीरोइंस मुझसे काम करने से रही, तो इसीलिए ब्लैक कपड़े सब पहने. Elena, one of my favorite co-stars, also sitting here. But wonderful to work with you, Huma ji. And no, I would love to work with you guys. Please find a local producer here. आप co-star लाएं, producer लाना चाहिए था. Signing amount ले लेती मैं. The channel itself is a big producer. Yes, please. Thank you. Namaskar. Actually, frankly speaking, you're such a natural actor. I've been your fan since long, actually. And Summer, you're doing a great job. Thank you. Well, I have a very personal question. And if you permit, I have 2 questions, actually. But I can guarantee the crowd it will be very interesting. Go ahead. एक-एक करके पूछिएगा. I have a goldfish memory. You're talking about controversy, so I'll just add on to that. Like, Huma, personally, I really appreciate the courage you have shown during that Me Too movement. You have been very vocal about it, and you have supported it. And as an actor also, my name is Pinky Pradhan, I know, although like every woman faces this sexual harassment in all the, field, but in our field we know it, because we can't be vocal about it many times. So I just wanted to know, where you got that courage to be vocal about it, and did you pay any price, like कुछ खोना पड़ा आपको इसके बाद, when you talk about it? Did I pay a price for? Me Too movement में, when you have been vocal about somebody, you have also like faced sexual harassment, so आपको कुछ लगा कि इंडस्ट्री आपके साथ है या नहीं है, या आपने कुछ खोया उसके बाद? Because it will inspire many. For that reason I'm asking you this. Is what? It will inspire many. Yes, your of course. answer. No, thank you for your question, and thank you for your courage for asking this question. Thank you. I believe that
it was a very important movement, the Me Too movement, and I feel very strongly about all the brave women who came forward and they shared their stories and what they had to go through and their struggles. I think for me, it's very important whether it's our home, it's our workplace, it's the film industry, it's any industry for that matter. We should have an environment which is safe for young girls to work in, to thrive in, and their growth should not come at the cost of them compromising in any manner. And no society can really call itself civilized if it can't provide just that much. Where did I get the courage from? My mother, maybe. You know, my mother is a very outspoken, boisterous, fun person, and she always told me this, you know, when I was growing up, that आपके घर में चोरी होती है, तो आप चोर को पकड़ते हो. जिसके घर में चोरी होती है, उसको victim shame नहीं करते हो. But whenever we talk about sexual harassment, we always shame the victim. That's true. And that's so sad. So that's something as a society that mindset we have to get out of, ki that girl is not at fault. She is a victim of the entire situation and the system, and therefore we have to protect her, and we have to bring people accountable who are responsible for these kind of activities. Thank you so much. And one more thing I also feel in any industry, the more number of women who work behind the camera will be better because they'll provide a more safer environment for everybody over there. Very good actually, to really bring a change actually, definitely. And another question, a very short question and interesting. You know, for every actor, I think Elena is also there here and so many actors, actresses especially, it is a pressure to be on size 0. Seriously, size 0. So has it ever bothered you, this size 0 concept? But size से क्या होता है? नहीं size does matter. Trust me guys, size does not matter. Thank you so All right. much. So we are running a little short of time, so we'll come to the final question. Letitia, you're up next. Yeah. So, hi Huma, I'm Letitia, and you know, I have been working in the digital media for the past 2-3 years. And I'm also building, I mean, we've already launched Odisha's first OTT platform, that is Tarang Plus. And it's the first and the only when we had launched. And we're still building a lot on the technology side. So my question to you is, will you be interested in acting in an Odia movie if we produce? Why not? Why not? Yeah. Send me a good script, I'll do it. Done. Thank you so much. और check भी ले आना. हाँ, वो तो आएगा ही. Manoj, I think, next question. Buddhaditya, can you pass the question, mic to Manoj? That's the last question. So, but thank you so much for being so Thank you gracious. so much. Thank you. Guys, a lovely audience. Hi. Yeah, 1 second. He's already there. Hi, Uma. Okay, 1, 2, 3. Last 3. 1? Okay, 1. Okay, 1. We have another program, sorry. Next program. मैं पूछ लूँ पहले? Thank you. Hi. आप तो रीजनल फिल्म देखती होंगी, मलयालम हुआ, तमिल हुआ, तो आपने कोई उड़िया फिल्म देखा आज तक? सच बताऊं? नहीं, झूठ. सब देखा है. देखा है? नहीं देखा? नहीं देखा. आपसे झूठ नहीं बोलूंगी. थैंक यू सो मच. मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई मेरा उड़िया फिल्म बाहर नहीं देखता. मैं बॉलीवुड में भी काम कर रहा था, एक शो स्टार का शो था, उसमें हीरो भी था. बट यहाँ आ गया तो जब मैं बाहर जाता हूँ तो जब मुझे कहा जाता है कि आपकी फिल्म नहीं देखी तो मुझे बहुत बुरा लगता है. उसके पीछे रीज़न बहुत सारा है. मैं बस ये जानना चाहता हूँ, जब आप कोई रीजनल फिल्म देखती हैं, क्यों देखती हैं, ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि हम उस तरह के बनाएं ताकि आप उस फिल्म को आप देखें. वेरी गुड क्वेश्चन. एंड पहले तो मैं अपोलोजाइज करना चाहूंगी कि मेरी गलती है. शायद मैं अवेयर नहीं हूं. एक्चुअली आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है कि मैंने आप तक नहीं पहुंचाया वो फिल्म. मैंने मैं वो फिल्म ऐसा नहीं बनाया कि आप तक पहुंचे. शायद ऑल ऑफ अस आर आर्टिस्ट सर. हम यहाँ पे सब आर्टिस्ट हैं. हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी स्टोरीज बता सकें, अच्छी परफॉर्मेंसेस कर सकें. ऑल ऑफ अस आर द सेम इन दैट सेंस. हम लोग सब कोशिश आर्ट क्यों बनाते हैं, फिल्में क्यों बनाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें. जी. मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ, मैं बहुत सारा अवेयर नहीं हूँ, मैंने बहुत सारा सिनेमा देखा नहीं है.
And yes, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, I'm not really exposed to Odia films. I'm sure you make some wonderful films over here. In fact, यहाँ आने से पहले मैंने एक दो लोगों से पूछा मैं फिल्में कैसे देखती हूँ, on recommendation to be honest, word of mouth. Exactly. अभी रिसेंटली मैंने कुछ मलयालम फिल्म हाल ही में देखना शुरू किया, ऑल बिकॉज ऑफ वर्ड ऑफ माउथ, बिकॉज किसी दोस्त ने देखी, उसने रेकमेंड की, फिर आगे रेकमेंड की. एंड आई एम श्योर यू गाइज आर मेकिंग सम वंडरफुल फिल्म, सो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू गिव मी अ लिस्ट दैट आई कैन वॉच एंड एजुकेट माई सेल्फ. नहीं, मैं एक्चुअली मेरा जो सवाल था वो ये था, जब आप कोई रीजनल फिल्म देखती हैं वो क्यों देखती हैं? ताकि सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से तो आप पिक्चर देख लिया आपने, वो अच्छी लगे या बुरे लगे वो तो आपके ऊपर है ना. तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि आप उस पिक्चर को जब रीजनल फिल्म के बारे में जी तो वो क्यों देखती हैं? ताकि आपको अच्छा लगता है. फॉर एग्जाम्पल आपने पक्का मालिक देखा ही होगा मलयालम की, तो वो क्यों अच्छी लगी? ताकि हमें पता चले हम उस तरह के कुछ बनाने की कोशिश. बहुत सिंपल सवाल है कोई भी फिल्म देखने का, कंटेक्चुअल. जी. I would like to see a film, if I'm watching an Odia film or a Bengali film or a Tamil film or a Telugu film or an Assamese film, for me it is about what am I getting to know about those people and that culture, their music, their stories, Exactly. their lives, their hopes, their sufferings. Because that's what it is, right? Like I know a friend of mine, he's making a show in Malayalam and I really wanted to be part of it. मेरे को लगा प्लीज मुझे कास्ट कर ले. मैं नाम नहीं बताऊंगी, आपको चल जाएगा कुछ दिन में पता. मैंने बोला प्लीज मुझे कास्ट कर ले. कहता है नहीं, I can't cast you. I was like, why? Because I want to cast a local girl. Exactly. And I really respected that decision because it would have been very easy for him to cast, you know, somebody from Bollywood, उसको budget मिल जाता जो भी है. But he didn't do that because he wanted to tell that story the way it should be told. So हम सब कोई भी film इसलिए देखते हैं because we want that local stories, folklore, history, art, culture, that to come out. यहाँ के struggles. What does a person on the road go through? You know, what is his journey? And I really feel like if we start telling authentic stories and very culture specific stories, they really will travel globally. Thank you so much. Thank you. Thank you, Huma, for answering all the questions. That brings us to the end of the Q&A round. But if at all, I know you can't have enough of Huma, I understand. But don't worry, you will get to, you know, connect with her after this event also. So on that, Huma, I just wanted to thank you on behalf of OTV, on behalf of Odisha, the people of Odia people, everybody in this room. You were a joy and an absolute pleasure to host. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for having me here, OTV, and to you for being a wonderful host. Thank you. Thank The pleasure is all mine.